record. Sure. आज हम लोग कर रहे हैं सेक्शन 170 रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स एंड केएमपी एंड देयर शेयर होल्डिंग। पीता हमारे साथ है। पीता शुरू करो। Every company shall keep at its registered office a register containing such particulars of its directors and key managerial personnel as may be prescribed, which shall include details of securities held by each of them in the company or its holding subsidiary of companies, holding company or associate companies. ठीक है, यहीं पे बोल्ड करना शुरू करो। एवरी कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस particulars of directors and KMP. Okay. ठीक है, details of securities, Details of securities. Yes. company holding subsidiary of companies holding or associate companies. ठीक है। ठीक है, ऊपर एक एग्जांपल डालो। कंपनी का नाम लो राइट मूव लिमिटेड। हाँ। ठीक है, डायरेक्टर एंड केएमपी में लिखो। दादा हाँ, दो नाम लिख दो डायरेक्टर्स के, एक पीएस का नाम लिख दो। Mr. Q. Mr. Q. And KMP में दादा ये निकाल दो एकदम कम मीठे में। RMD CS लिख दो इसको। ओके। ठीक है, यस। तो ऊपर लिखो राइट मूव लिमिटेड, राइट मूव लिमिटेड, राइट मूव प्राइवेट लिमिटेड, फिर राइट मूव होल्डिंग सब्सिडरी, राइट मूव होल्डिंग लिमिटेड, राइट मूव सब्सिडरी, राइट मूव फेलो सब्सिडरी, राइट मूव एसोसिएट, राइट मूव फेलो सब्सिडरी लिमिटेड एंड राइट मूव एसोसिएट। ठीक है। ठीक है, तो अभी क्या करना है, राइट मूव लिमिटेड कोई भी टाइप की कंपनी हो, ठीक है, उसको रजिस्टर मेंटेन करना है। यस। लिखो रजिस्टर नीचे लिखो एंटर रजिस्टर। ठीक है, जिसके अंदर डिटेल एंटर करनी है PQR की, P-Q-R and securities held by PQR in all the above companies. C oblique Company holding subsidiary. fellow subsidiary and associate. Yes. Fellow subsidiary and associate. घर पे वैसे जैसे ही करती हेलो 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 हाँ बोलो। सर सेकंड सबसेक्शन a return containing such particulars and documents as may be prescribed of the directors and managerial personnel
shall be filed with the registrar within 30 days from appointment of every director and key managerial personnel as the case may be, and within 30 days of any change taking place. ठीक है, तो फॉर्म टू बी फाइल्ड विद आरओसी. Yes. ऊपर ना form to be filed with ROC. हेलो सर, आपकी आवाज कट रही है. फॉर अपॉइंटमेंट, फॉर अपॉइंटमेंट, ROC for appointment, फॉर चेंज appointment or change within 30 days from such appointment or change. from such appointment or change. तो अगर मिस्टर पी को अपॉइंट किया आपने, एग्जांपल लिखो, पी अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर, Mr. P appointed as additional director on January 1, 2023. So when we have to file this form? within 30 days. So by January 31st. File form appointment by January 31, 2023. ठीक है. ठीक है, अभी इसको रेगुलराइज किया मिस्टर पी को सितंबर 30 को. रेगुलराइज इन एजीएम on September 30th. Change in has to be filed within 30 days from September 30th. तो अक्टूबर 30 तक Form by October 30th. ओके, For change. आगे बढ़ो. ठीक है. सबसेक्शन नहीं, फिर इसके बाद रूल है. अभी समराइज कर दो जितना पढ़ा पहले. So 170 talks about any register of directors and KMP and the shareholdings in the companies. So any company, whether it is public company, private companies, holding subsidiary, associate, or any fellow subsidiary company has to maintain this register. And this register must reflect the securities held by any director or KMP in any company holding subsidiary, fellow subsidiary, or associate companies. Any director who has been appointed, or if there is a change in appointment, a form has to be filed with ROC within a period of 30 days. So, for example, if Mr. P is appointed as a director on 1st January, so a form for appointment has to be filed by 31st January. If any director regularize in the AGM, that means he's appointed as a director, then the form has to be filed within 30 days showing the change in designation or regularization of such director. Okay. Yes, ये clear है. फिर rule 17, register of कितना हो directors. गया, कॉपी करके ऊपर ले लेना होगा. ठीक है. Rule 17, register of directors and key managerial personnel. Every company shall keep at its registered office a register of its directors and key managerial personnel containing the following particulars, namely. अभी क्या करो, जो चीज पूछ रहा है मिस्टर पी का एग्जांपल लेके उसके आगे भरती जाओ कुछ, तो वहीं पे नीचे. ठीक है. यहाँ नहीं, एंट्री के आगे नीचे नीचे जहाँ रूल्स हैं उसके सामने लिखते जाओ. ओके. मिस्टर पी, director identification number, optional for key managerial personnel.
तो मिस्टर पी का दिन लिख दो, कुछ भी लिख दो। ओके। Present name and surname in full. Mr. P. Present name, surname. ये नहीं है ना, फुल नेम लेना है। ये टॉपिक भी वो कर लीजिए। Surname. Any former name or surname in full. अगर कोई पहला नाम होगा तो no, not applicable. फिर father's name, mother's name and spouse name if married and surname in full. The father's name Mr. J. Mother's name Miss T. Spouse name Miss R. In full, तो Mr. J. फुल का मतलब फुल होता है, डॉट नहीं है ना फुल में। Miss. And spouse name if married in full, yes. Miss. Fair date of birth. 19 December 7th. 1985. Residential address. Building Pedder Road. Mumbai 26. Nationality Indian. Occupation if businessman. Date of board resolution which appointment of way January 01 2023. Date of appointment and reappointment in the company. Reappointment of September 30th 2023 regularized. Date of cessation of office and any reasons therefore not applicable, still continuing as a director. Office of director, key managerial person held or relinquished in any other body corporate. So yes, CEO of XYZ Limited. Membership number of Institute of Company Secretaries of India in case of company secretary if applicable to any. PAN number mandatory for KMP if not having DIN. PAN number AA etc. Okay. So in addition to एएमपी के details. लिए ना, वो डायरेक्टर के लिए नहीं। Achha. So this is not applicable. So in addition to details of the directors or key managerial personnel, the company should also include in the aforesaid register the details of securities held by them in the company, its holding company, subsidiaries of the company's holding company, and associate companies relating to the number, description, and nominal value of securities. So, 10 equity shares of ₹100 each. So date of acquisition, price or consideration paid. Date of acquisition, December 30th, 2022 at ₹1,000. The date of disposal and price or the consideration received, no, securities are not being disposed of. Cumulative balance and number of securities held after each transaction. मतलब number of securities ना, तो हर ट्रांजेक्शन होने के बाद कितना हो गया? तो अभी 10 ही रहेगा ना? 10 ही रहेगा. 10 equity shares. अगला खरीदेंगे तो फिर 11, फिर 12. Yes. Mode of acquisition of securities off market. Mode of holding physical on dematerialized demat form. Materialized form. Whether securities have been pledged or any encumbrance has been created on the securities, no. अगर कोई प्लेज की हुई है शेयर तो उसको हाँ, बैंक के साथ है. ठीक है. फिर रूल 18. अभी जितना लिखा उसको बोल्ड कर ले. जो भी आंसर लिखे उनको बोल्ड. यस. स्टफ इसको भी बोल्ड किया. Date of birth. Okay. Indian.
businessman, January, any D 10 equity shares. Be bold of market from no ठीक है मैं बोल्ड कर दिया. अगला रूल Rule 18, a return containing the particulars of appointment of director or key managerial personnel and changes therein shall be filed with the registrar in Form DIR 12 along with such fees as may be provided in the company's registration office and fees rules 2014 within 30 days of such appointment or change as the case may be. तो आगे लिख दो पर जहाँ रिटर्न के आगे डेट 12 File reform for appointment. ये क्या अभी गूगल में जाओ एक रजिस्टर और डायरेक्टर का फॉर्मेट निकालो और देखो कि वही सब है. Okay. Register of directors. Register of directors and KMP format. Section 170. इसमें तो नहीं है. हाँ ये इसको थोड़ा बड़ा करके देखो वही भरा है जैसा. ठीक है. अभी इसको रूल 17 के साथ कंपेयर करते हैं. Director register of directors containing the DIN, yes. फिर present name and surname. तो present name ये है, surname के साथ former name if any, then father's name, mother's name. उसी फॉर्मेट में सब आया हुआ है, बार बार मूव मत करो, वहीं पे देखो. Father's name, mother's name, spouse name है, date of birth, residential address, nationality है, service, board resolution, date of change, appointment, reappointment, cessation if any. पैन नंबर यहाँ पे भी दिया हुआ है डायरेक्टर का. परमानेंट एड्रेस, रेसिडेंशियल नेम, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज, डिस्क्रिप्शन, नॉमिनल वैल्यू, डेट ऑफ एक्विजिशन, कंसिडरेशन पेड, other considered cumulative balance, mode of acquisition, mode of holding in demat, pledged, nil, remark. ठीक है सर, सब कुछ कवर्ड है इसमें. अगला पेज रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स इन, ये दूसरे डायरेक्टर का है. ऐसे उनके सारे डायरेक्टर्स जो है उनका है. द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज. ठीक है, तो ऐसा होता है यस रजिस्टर. ठीक है. ठीक है, अभी आप इन नोट्स पे आओ, एक बार समराइज करो फिर ये बाद में करो. कलर वलर कर लो, थोड़ा सेटिंग वेटिंग कर लो. एज मे बी यहाँ पे था ना रजिस्टर्ड डिटेल्स. सेक्शन 171 कर दो पहले. 170 हाँ सबसेक्शन 1. 170 सबसेक्शन 2 था ये. इसमें एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड था. प्रिस्क्राइब्ड इसके अंदर ये रूल था. ठीक है, अभी बिना कुछ देखे एक बार समराइज कर दो क्या कर. तो रूल 17 के हिसाब से डिन, फिर प्रेजेंट नेम एंड सरनेम,
नहीं सब लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समराइज करो क्या कर। अच्छा, रूल ये कह रहा था कि जो सेक्शन के section 170 subsection 1 stated that every company has to have a register of directors and key managerial personnel, and such register must also state the securities held by each directors in all the companies, whether it's a holding subsidiary, fellow subsidiary, or associate of such company. Then, as per this section, there's a rule which prescribes the contents of the register, such as the name, DIN, surname, present name, number of securities held, etc. 170 subsection 2 states a form which is to be filed with ROC whenever there is an appointment or any change in appointment of a director. This form has to be filed within 30 days. डायरेक्टर और केएमपी. Director or KMP. This form is DIR 12, which has to be filed within 30 days from any appointment or any change. ठीक है, क्लियर है भी 170? Yes, clear है. अरे बस. ठीक है.